You can see in the book of now the chapter is friction. We are going to start each part question answer. Question E1 and E2 already done in the last class, and we have to start with third answer. We have to start with third answer, and third answer is static friction is always more. Static friction is always more than sliding friction, or sliding friction is always slightly less than static friction. This is the question we have to cover. This is the question we have to cover like this. Accordingly, we have to write the answer also. When an object is, the answer will be like this, not too lengthy, only to the point answer should be there. This one, static friction. When an object is at rest, static friction works between the surface of the object and the ground. This is the friction which opposes the motion of the object. It does not allow the object to move at all. Then we apply force to push or pull the object, whether it is a box or a table or chair, whatever it is. So static friction is working on stationary objects. When we apply force and the object even then does not move, so that means applied force is not sufficient enough to overcome static friction. When we apply little more force and the object begins to move, this is sliding friction. You always know slide friction always opposes the movement of the object, always opposes motion, always works in opposite direction. So here sliding friction, as sliding friction allows the object to start its journey, as the sliding friction allows the object to start its journey. So we can say this is sliding friction. So we can say sliding friction is little less than static friction. If sliding friction would not have been less, then it wouldn't allow the object to move. That will be equal to static friction. फिर तो वो static friction हो जाएगा. So sliding friction is always less than static friction because it allows the object to start its movement. इसीलिए. And the maximum value of static friction is known as limiting friction. Do not get confused. There are three types of friction associated with motion of the same object. It is static. Static friction does not help object to move. Sliding friction helps the object to move. And rolling friction is the least friction among all these three, which helps the object to move freely, easily, and with less effort, with the least force. लेकिन यहाँ one more friction is there, that is limiting friction. Maximum value वाला friction. किसका maximum value? The maximum value of static friction is known as limiting friction. ये maximum limit है static friction का. And after this, after limiting friction, sliding friction starts. Since sliding friction is associated with movement, it is also known as kinetic friction. So this is all about answer 3. I have written there. I will post all the notes, class notes in your class group. Simply note down those students which can prepare their own answers. They wish to write their own language. So most welcome. They can do that. Static friction comes into play when we apply a force to a body at rest. This static friction opposes the applied force. This friction increases on increasing the applied force but up to a certain limit. जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन भी इंक्रीज करता है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस लिमिट द बॉडी बिगिंस टू मूव. At this point, sliding friction works between the two surfaces in contact. Sliding friction allows the body to move from resting friction. So, sliding friction is slightly less than the static friction. हमेशा याद रखना जो फ्रिक्शन मूवमेंट को सपोर्ट करता है it is always less. Next question is,
Give reasons. Next question is give reasons. Give reasons. Here you can say answer is why. जो हम लोग word बोलते हैं ना, why this, why that, what is the reason behind, why does it move, why does it fly, and so on. यहाँ भी why do we tend to sleep when we step on a banana peel. यही है give reasons. We tend to sleep on a banana peel. Banana peels are very smooth. When we step on a banana peel, the friction between the peel and the ground decreases. When we step on a banana peel, friction between the peel and the ground reduces and we tend to slip. ये इसीलिए होता है. The second question is, when a heavy box is pushed, it is easier to push a lighter box than a heavy box on the same floor and the same type of box. When same type of box is made heavier, it is difficult to push. Always remember, friction is associated with weight. When weight is more, the force between the surface of the object and the ground increases. As we increase the force, this pressing force actually help to increase the friction also. When a heavy box is pushed, the force, or we can say weight, pressing between the box and the floor is also more. This creates more friction, which makes pushing up the heavy box difficult. This is what the answer is. The third question you can see in the book. The third question from give reason. When we push a cart, more force is required. But once the cart starts moving, जब वो गाड़ी चलने लगती है, less force is required to push. यहाँ actually the answer is sliding friction and rolling friction. We need sliding friction help the cart to move, to start its movement. But once the cart starts moving, rolling friction comes into play. उसके पहिए होते हैं ना, wheel की वजह से rolling friction is created, which is much less than sliding friction. इसीलिए we need less force to push a moving cart. कार्ट जब मूव कर रहा है उस समय आगे कंटिन्यू करने के लिए लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड. फोर्थ, स्पोर्ट्समैन यूज स्पाइक्ड शूज. ये तो जानते हो, ये वेरी इजी. स्पोर्ट्समैन wear spiked shoes. Sportsmen wear spiked shoes. Can you answer why? Yes, ma'am. To increase friction or to decrease friction? Hold the ground. To increase friction, to decrease friction? To increase friction. And increasing the friction will provide better grip on the ground. जमीन पर जो जूते की पकड़ होगी, that will be better. So they use spiked shoes. Next answer number E. Ball bearing are used in machine. यहाँ भी once again ball bearing provide rolling friction. Rolling friction is the minimum friction among all three types of friction. तो and to prevent wear and tear, machine के parts पुर्जे जो हैं वो घिसे नहीं, so ball bearings are used. Ball bearings are used to reduce friction. Ball bearings are used to reduce friction. F. Tires of vehicles are needed to be changed regularly. Why it is needed to change the tires regularly? After few hours, कुछ सालों के बाद टायर चेंज करने पड़ते हैं गाड़ियों के. क्यों? क्योंकि वो घिस जाते हैं. क्या घिस जाता है?
टायर का, हाँ, टायर घिस जाते हैं। एक मिनट एक मिनट, तो उस वजह से जस्ट मिनट वेट। टायर का विच पार्ट इज वोर्न आउट? विच पार्ट, उस पर क्या बना होता है? ट्रेड्स। हाँ, डिजाइन नहीं बोलते बेटा, वो ट्रेड्स है। और इंटरेस्टिंग है, जो गाड़ियां जैसे कि हिली एरिया, जो आईसी एरियाज में चलती हैं, जैसे कि तुम्हारा नॉर्थ पोल एरिया, आर्कटिक एरिया हो गया, या जम्मू कश्मीर वगैरह, उधर बर्फ, जाड़े वाड़े में तो खूब बर्फ गिरने लगती है, रोड सड़कों पर बर्फ, और यहाँ वहाँ सारे एरिया बर्फ से भर जाते हैं। तो बर्फ पर चलने वाले व्हीकल्स, डेजर्ट एरिया में चलने वाले व्हीकल्स, रोड पर चलने वाले व्हीकल्स, जो टायर की ट्रेडिंग जो होती है ना, वो अलग अलग तरह से होती है। ये मालूम था? जो सैंड पर डेजर्ट एरिया में जो चलने वाली गाड़ियां हैं ना, उनके टायर की ट्रेडिंग थोड़ी अलग तरह की होती है। हाँ, तो ये जो ट्रेडिंग होती है, जिसको अभी कोई डिजाइन बोल रहे थे तुम लोग, डिजाइन नहीं, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बोलते हैं, TREADE, trading. The trades are made on tires to provide sufficient friction and to have easier movement on the road. Due to continuous running, actually trades on tires get worn out. And friction reduces between the tire and the ground. And there is a chance of skidding of vehicles. गाड़ियां जो फिसल, हम लोग स्लिप करते हैं और व्हीकल्स स्किड करती हैं, SKID। काम एक ही हो रहा है, गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, लेकिन वर्ड इज डिफरेंट। तो टू प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स, इसीलिए नए टायर्स टाइम टू टाइम लगाने होते हैं। नेक्स्ट इज मशीन पार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑयल्ड और ग्रीस्ड। मशीन पार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑयल और ग्रीस्ड। कैन यू गेस? Machine parts are oiled to decrease friction, to decrease friction, to increase friction, to to decrease friction, to decrease friction। बहुत अच्छे। और ऑयलिंग और ग्रीजिंग जो होती है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन, यू रिमेम्बर, वो जो पार्ट्स ऑफ मशीन्स, दे ऑल्सो गेट worn out, they also get damaged, and when they get damaged, तो to work them properly lot of energy is also required। हम लोग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वैसे को चलाने में, मेहनत ज़्यादा और काम भी ठीक से नहीं होता। तो दैट इज़ वाई ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग इज डन टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर ऑफ द मशीन पार्ट्स, इसके लिए, सो दैट द मशीन पार्ट्स रन स्मूथली। देन नेक्स्ट इज H, स्पोर्ट्स कार, एरोप्लेन, बोट्स आर गिवन स्पेशल शेप। स्पेशल शेप, यहाँ भी टू डिक्रीज फ्रिक्शन और टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, बहुत अच्छे। टू डिक्रीज फ्रिक्शन, एयर और फ्लूइड फ्रिक्शन, टू डिक्रीज फ्लूइड फ्रिक्शन, वाटर अगर बोट है तो, एयर अगर स्पोर्ट्स कार है और एरोप्लेन है तो टू डिक्रीज फ्लूइड फ्रिक्शन, they are given special shape, and this particular shape is known as streamlined. This particular shape is known as streamlined shape. To acquire faster, obviously, when friction reduces, so speed will be more, to have better speed and to reduce friction. Second last question, metal chains are wrapped, लपेटा जाता है, on tires. Metal chains are wrapped on tires when they run on icy road. To increase friction, to decrease friction. to decrease friction. Increase friction. To increase friction. Right. To increase friction. Icy road, slippery, very smooth. To increase friction, metal chains are wrapped, लपेटा जाता है, on tires when they run on icy roads. जहाँ भी फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन के शूज हो, चाहे ये हो, मेटल चेन का रैपिंग हो, टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ये सेकेंड पार्ट नहीं भूलना, टू हैव अ बेटर ग्रिप, मजबूत पकड़, अच्छी पकड़, ऑन द ग्राउंड, इसीलिए फ्रिक्शन इंक्रीज किया जाता है।
And the last one, Similar. rollers are used for transporting luggage. Rollers are used for transporting luggage. So rolling friction, to create rolling friction is minimum friction. We need less energy to push or pull the luggage. उसके लिए तो ये rolling friction is created, and you know rolling friction is always the least friction, much less than sliding and static friction. Static friction maximum, sliding friction less than static, and rolling friction is less than these two, static and sliding friction. Minimum होता है rolling friction. And the last question, state and explain. ये comparatively थोड़ा सा longer question था, क्योंकि we have to write about with examples. वो भी we have to write about the how the friction is useful, how the friction is harmful, stating some examples. So this is how we had to write the question accordingly, and comparatively uh, longer comparatively longer answer. Friction is the force that opposes motion. Friction is useful as well as harmful also. Friction is required up to a certain limit only. That means friction should not be neither too high nor too low. न तो बहुत ज़्यादा न तो बहुत कम. Neither too high nor too low. तो neither too much nor too less. ये होना चाहिए friction. तो we need a moderate amount of friction for the movement of all types of objects. This is how, in certain situation, friction is increased to have proper movement in objects, such as tire of vehicles are treaded, sportsmen wear sports shoes with spikes, kabaddi players rub their hand with soils, gymnasts apply chalk powder on their hands. In all these situations, friction is increased up to the desired amount, desired magnitude for proper movement. Whereas in other situation, friction is reduced to have better movement. अब यहाँ पर कुछ situation ऐसे हैं where friction has to be reduced. The first one is polishing of surface of objects, oiling, greasing, और and देखो लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, sprinkling talcum powder on carom board. In all these four cases, friction is reduced to the desired value for smooth movement of the object. So this was all about question answer from friction part. And now we have to start कुछ anything to revise here? Anything to No, revise? ma'am. Clear? हाँ ये No, ma'am. हाँ एक बार जो ऑयलिंग ग्रीजिंग आ गया समझ में, अगर स्मूथ कर रहे हैं किसी चीज को, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, और किसी चीज को रफ बना रहे हैं, दैट मीन्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन. बस these two are the basic funda. And friction is a necessary evil, because in some situation it is very useful and in other situation it is harmful. And according to our need, we adjust the friction by increasing it or decreasing it. Anything to revise from this chapter? Please answer me. अच्छा ठीक, No, very ma'am. good, very good. So that No, means ma'am. good. That means that chapter is No, ma'am. almost clear to you. ठीक है? Or I will post the question answer. I will post the question answer in the class group. You can copy it. Those students who can prepare their own answers in their own language, or they can find the answer from the book or somewhere else, but the answer should be correct. If you want to write the answer from other science books, then also applicable, but the answer should be correct. Or question A, B, C, fill in the blanks, true, false, tick the correct answer. Do not write in the copy. Last time also I had told you, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. Learn directly from the book. Learn directly from the book. This is what your friction chapter is.
The next chapter, I would like to, I will not go into very much details, only the introduction, only the introductory part, and it will be metals and non-metals. We are starting with the new chapter, metals and non-metals. Metals and non. Please adjust your screen. You can see metals and non-metals. Many things you can see the colorful picture also here. So objects हैं, on the left side there are mostly the materials such as copper, जो yellow है वो copper, तांबा, copper, then iron, लोहा, aluminium, white color, that is also visible in the picture. And right hand side there are some vessels made up of glass, कांच के बने हुए कुछ बर्तन हैं, and some colorful liquids are stored in them. In this, and now you can guess, in this chapter we will discuss about different types of metals and non-metals. But before that, what are metals, what are non-metals? This is the question arise, what are metals and non-metals. तो थोड़ा सा हम लोग क्लास 7 में जाएंगे, 2 मिनट के लिए क्लास 7 में जाएंगे, वहां का टॉपिक पिकअप करेंगे. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स. That means pure substances and impure substances. Impure substances में नहीं पढ़ना है, हम लोग को केवल पढ़ना है pure substances. Those substances which are made up of same kind of particles, चाहे वो molecules हो या atoms हो, कुछ भी हो. Those substances which are made up of same types of particles are called pure substances. Pure substances may be some pure substances may be water, pure substances may be gold, silver. All these may be pure substances because they are made up of same type of atoms or molecules. Those substances which are made up of same types of atoms or molecules are called pure substances. When they are, once again, when they are made up of same types of atoms, smallest particle, when the substances are made up of same types of atoms, then it is known as element, molecule of element. बस यहाँ से start करेंगे हम लोग. When a substance is made up of same types of atoms, it is known as element. Example, copper, silver, iron, etc. Altogether, पूरी दुनिया में till now, अभी तक, there are about 118 animals known to us. अभी तक known to us. Some are similar in their appearance, some are similar in their taste, some are similar in their internal composition, chemical composition. तो according to their properties, कैसा कैसा properties भाई? तो बाहर वाला, बाहर से जो दिखता है ये, that means physical properties, and chemical composition, अंदर से कैसा है यानी chemical properties. So many elements are similar in their physical and chemical properties. So we need to classify different elements, 118 elements, into two main categories, metals and non-metals. Some elements are metals, some elements are non-metals. They have been classified so according to their different physical and chemical properties. And this grouping of element is known as classification of elements. Classification of elements. The elements have been broadly classified into two categories, once again, metals and non-metals, on their physical and chemical properties. As I told you right now, how are they classified?
तो they are classified according to their physical and chemical properties. Occurrence of elements, कहाँ मिलते हैं, बस ये वाला बता करके then we will move on to our group. Occurrence of elements, ये आखिर कहाँ मिलते हैं भाई? मेटल एग्जिस्ट इन, अब मेटल्स कहाँ मिलते हैं, नन मेटल्स कहाँ मिलते हैं? जस्ट लिसन, एक्चुअली इट इज रिटन इन द बुक ऑल्सो, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. मेटल एग्जिस्ट इन लार्ज अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के जो लेयर्स होते हैं, मेटल्स आर फाउंड देयर. Aluminium is the tick this one, aluminium. Aluminium is the element which is found in largest amount. That means aluminium is the most abundant metal. सबसे ज़्यादा aluminium पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में. It is followed by iron. Second number, iron. Name the element which is found in the most abundance amount. Then it is aluminium. Second number, iron. Highly reactive metal, that means which can react with anything. Highly reactive metal like sodium, potassium, aluminium and zinc are found in nature in the form of their compound, such as sodium carbonate, पोटेशियम सल्फाइड, कार्बोनेट ऑक्साइड्स एट्सेट्रा. इस तरह से मिलते हैं, सिर्फ सोडियम या पोटेशियम के रूप में नहीं मिलते. दे आर फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड फॉर्म, दैट इट मीन्स इन कंपाउंड फॉर्म, किसी और चीज़ के साथ कंबाइन करके, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बोनेट फॉर्म में ही मिलते हैं. सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक. लेस रिएक्टिव मेटल, वैसे मेटल जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं. लेस रिएक्टिव मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. प्लैटिनम इज द कॉस्टलीस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड. ये गोल्ड से भी महंगा होता है. और जानते हो ये स्टील के जैसा लगेगा, छुओगे या देखोगे तो ये बिल्कुल लगेगा कि अरे ये तो स्टील का मटेरियल, स्टील मटेरियल है, लेकिन नहीं, प्लैटिनम इज द कॉस्टलीस्ट मटेरियल. Gold, silver and platinum occur in nature in their elemental purest form. किसी चीज के साथ कंबाइन नहीं करते. गोल्ड है वो गोल्ड के रूप में ही है, प्लैटिनम वो किसी कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड इस फॉर्म में नहीं मिलता. और नेटिव स्टेट, नेचुरल फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म, नेटिव स्टेट. Many non-metals are found in their free state in atmosphere. देखो, metals are found, most of the metals are found in earth crust, most of the non-metals are found in atmosphere. Oxygen and nitrogen are two well-known examples of non-metals. Several non-metals exist in nature in the form of their compounds such as oxides and nitrates. सल्फर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. सल्फर ऐसा एलिमेंट है, ऐसा नन मेटल है जो फ्री, सिर्फ सल्फर के रूप में भी है और कंबाइंड फॉर्म में भी है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, उस तरह से करके भी मिलेगा. कार्बन एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट. कार्बन एलिमेंटल फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म में भी मिलता है, नोन एज डायमंड, ग्रेफाइट and fullerene. These are the purest form of carbon. Diamond, graphite जो पेंसिल में यूज होता है, graphite and fullerene, ये कार्बन की जैसा ही ब्लैक मटेरियल होता है. These fullerene is I think for the first time you are going through. These are the elemental form. These are the purest form of carbon. Carbon also exists in the form of carbon dioxide, carbonates and bicarbonates. This is all about introduction to the chapter. In the next class, we will study about, this one, minerals and ores. लेकिन I would like to define minerals and ore. थोड़ा सा हम ये define कर दे रहे हैं, what are minerals, what are ore. Minerals is the inorganic compound. Inorganic मतलब कार्बन नहीं रहेगा उसमें. Organic means carbon necessarily present. A mineral is a naturally occurring inorganic substances found deep under the surface of the earth. लेकिन ore
An ore is a mineral from which one or more metals can be extracted profitably. Profit, फायदेमंद रूप से. Ore is the combination of minerals. और जो है बहुत सारी, वो मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला होता है. और से मिनरल को निकालना होता है. अब ज़मीन के अंदर है तो कुछ मिट्टी होगा, कुछ स्टोन होंगे, कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, दैट इज नोन एज ओर. एंड मिनरल sorry, and an ore is a mineral from which one or more metals can be extracted profitably. For example, aluminium is extracted from its bauxite ore. What is bauxite? Bauxite is the name of the ore from where aluminium is extracted. Extract करना means बाहर निकालना. Iron is extracted from hematite ore. ये जमीन के अंदर से माइनिंग करके बॉक्साइट निकाला जाता है, which is known as this, which is an ore, and from ore aluminium is extracted. माइनिंग करके हेमेटाइट, आयरन माइंस होते हैं, माइनिंग करके हेमेटाइट एक्सट्रैक्ट किया जाता है और हेमेटाइट को शुद्ध करके हेमेटाइट से आयरन अलग किया जाता है. तो लॉन्ग प्रोसेस, टीडियस प्रोसेस, काफ़ी मेहनत है उसमें. देर आर सर्टेन स्टेप्स, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. और ये जो साइंस है, ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी. ये इंजीनियरिंग का पार्ट है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग का पार्ट है. मेटलर्जिकल इंजीनियर, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इन द सेम वे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होती है, पढ़ाई होती है. इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, फिर इसकी पढ़ाई होगी. और वही सेम जैसे ये यहाँ हमारे यहाँ जैसे ये कोल एक्सट्रैक्शन होता है, कोल माइनिंग होती है, इन द सेम वे जिस एरिया में ये ओर पाए जाते हैं, आयरन फील्ड्स वगैरह होते हैं, पन्ना वगैरह जाओगे तो वहाँ गोल्ड माइंस हैं. सिंगरौली में भी हाल फिलहाल में गोल्ड माइंस डिटेक्ट हुआ है कहीं आसपास, कहीं वो एग्जैक्ट प्लेस का हमको याद नहीं है. तो वहाँ भी सेम माइनिंग करके निकालेंगे. और जमीन के अंदर से ओर इज एक्सट्रैक्टेड एंड फ्रॉम ओर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड. वो ये फैक्ट्री में होगा, ये फैक्ट्री का काम है. जमीन के अंदर से ओर निकालेंगे और ओर को शुद्ध करेंगे, वहां से मेटल को निकालेंगे. ये मेटल निकालने का काम फैक्ट्री में होगा. मिनरल्स एंड ओर्स. मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर. ये हमने बहुत सिंपल डेफिनेशन बताया है. दिस इज ऑल अबाउट, and this is what